Okay, so today we are going to start with VPC. What is VPC? What are the different components of VPC? We are going to cover it. Okay, so VPC is one of the important topic in AWS because it's revolve about the network and security. So, what are topics we are going to cover? What is VPC? Features, default VPC versus custom VPC, VPC peering, NAT instant, NAT gateway, NACL, VPC flow logs, bastioners, and direct connect. So, what is VPC in general? So, think VPC as a virtual data center in the cloud. Okay, before going to VPC, how many of you know about a VPN? What is VPN? VPN. Right? What is that? Actually, every company has their own private network, right? What is their use for? So that no other people outside the world will able to access the internal service of the company, internal portals, internal applications are accessed within the company's network. You cannot access, or nobody from outside world can access that particular application or services outside the company network. So that in general there are two types of network: public and private. Right? Public network means the network which is accessible by all the people around the world, and private network means the network generally created by company or organization or colleges where the internal application, internal software will be accessed, and the people who are authorized to access that network can only access that applications. It's called private network, right? So till now, if you are working on on-premise, till now, if you are working on on-premise, that means you can create VPN, virtual private network. Now we are talking about cloud. So if you are working on cloud, you should have some feature, right? Where you can create your own virtual private network. Agree? So that's where VPC comes in picture. VPC comes in picture where you can create your own virtual private network. So Amazon Virtual Private Cloud let you provide a logical isolated section of Amazon. Logical isolated section of Amazon. Web Service Cloud where you can launch AWS resources in virtual network. Amazon Web Service Cloud where you can launch AWS resources in a virtual private network that you define. Now, why we are talking about VPC? Because right now, whatever the EC2 machines which we have created, okay, all the machines which we have created were in default VPC, right? Default VPC means the VPC provided by Amazon. Agree? Now, in a company, in an organization, I want to create my own VPC with own sets of rules and regulations, and I want complete control. Next, you have complete control over your virtual networking environment, including selection of your own IP address range, creation of subnets, and configuration of route table as well as network gateways.
So basically, it while by creating a virtual network, first of all, it gives you the complete control. Okay, it gives you complete control, and it helps you out with selecting your own uh, sets of IP ranges and other component. So you can easily customize network configurations for your AWS virtual private cloud. For example, you can create public facing subnets for your web application. Okay. So now why we required VPC? Why we required private network? Anybody can give me an example? Why we require a private network? Mhm. Nobody can access from outside. Okay. That's the one thing we require private. So moreover, we want everything to be secure, or in general, the word private itself means I don't want to. If I'm doing any activity, I don't want anybody from other world should know what I am doing in general. Okay. So what I'm doing, or the connection between my EC2 machine, just take example of EC2 machine. I don't want anybody from outside should know that I am connecting to EC2 machine. It's private. I don't want any other person or any other organization should know that I am connecting to the EC2 machine. I want to create a private things. So in general, there are two component: public component and private component. Okay, public component and private component. So what is public component? The component which is faced as a front end of generally websites, right? Websites, applications which are used for public interaction are called public facing application. Just take example of IRCTC website. Are you allowed to log in into their servers? Are you allowed to log into their servers? No. Only you are provided with front end, that is website. Whatever the interaction you want to do, you can do with the website, but you are not allowed to go access their database, right? Yes or no? कभी आपने को उन्होंने कभी आपको एक्सेस दिया है क्या डेटाबेस से? Okay, so what they have given, they have given you the front end. They have given you the front end of your application. The application will interact with backend server that is private. All the doc services, all the databases which we have learned previously are private, but there are front end which are used to access them. Okay, so all the companies has front end, back end. So you can create a public facing subnet for your web server that have access to internet, and place your backend system such as database, applications, servers in private facing subnet with no internet access. So what is your private? They will not have internet access. One of the other thing is the application will not have internet access. Okay.
Uh-huh. Right. Uh-huh. Right. It's just like your bank. You can access only yeah. Okay. You can only access the your bank account or your information to a front end portal. That's it. Okay. Even if you go to bank, you can only access the cashier. Can you go to the vault where the money is kept? Are you allowed? Okay, so that's what in general your any network is there. So there are two type of network, public and private. So you can create your custom network as per your settings, as per your requirement. By default, Amazon has given you a default VPC. What is default VPC? VPC which is been generally used by without any configuration. Okay, Amazon knows that people are not quite comfortable while using VPC if a very first day you have to set up the VPC. So what they have done, they have given a default VPC which we are going till now we are have been used. Okay, so now so in doing that your servers are exposed to the internet, but your sensitive application and database are not exposed to the publicly available internet. Okay, now what is then you can leverage multi-layer security including security group as well as network access control list or we generally call NACL to help you control access to your EC2 machine in each subnet. Now what is subnet? What are the different type of subnets we are going to cover? But just remember that we get more control if we are creating our own VPC. Additionally, you can create hardware virtual private network connection between your corporate data center and your VPC and leveraging the AWS cloud as an extension of your corporate data center. So second thing is connecting your AWS with your existing on-premise data center. That is one of the important thing, right? So while working in cloud, there are scenarios where your company is still working on on-premise and you require a connection between your on-premise and cloud. So in that scenario, you can use VPC to customizely connect your on-premise data center to cloud. So these are the few things you can leverage while using VPC. Okay. Now this is a diagram. This is a block diagram which we have to create step by step over the last next 2 days. What is this? This is the end-to-end solution of VPC. Okay. So how can you create a VPC? We are going to see what are different component in this VPC. This is a final thing which you will see. Okay. So in the top maroon line, it's a region. Inside a region, there is a VPC. That's custom VPC which we are going to create. Till now, we were using private default VPC. Now we are going to create our own VPC. We are going to configure it as per our convenience. It will has internet. It will has a route tables. Okay. Then there will be a subnets, public and private subnets. There will be security groups. Then there will be EC2 machines, network NACL, and so on. There are a couple of more things. So right now, this diagram might not be that
comfortable to see for you right now, but we are going to cover one by one and we'll create this complete diagram and we'll understand how you can create your own custom VPC. Why custom VPC is required? We will cover next. So now you have to understand there is a IP ranges available that is provided by Amazon. So there are a number of IPs, right? If we are talking about IPv4, we have seen that IPv4 has nearly 4 crore IP ranges. After that, Amazon provide this three IP ranges 10.0.0.0.0 to 10.255.255.255 IP private IP 172.16.0.0 to 172.31.255.255. Okay, in short, it is written like this. And third IP range is 192.168.0.0 to 192.168.255.255. This is the IP range provided by Amazon to create your private network. So, how many of you know the CDI range, CIDR range, or how you can create a network? If somebody has given you the IPs, can you find out the IP ranges? How many of you know that? Okay, so let me show you. Okay, so what is CIDR range? Okay, in network, uh, remember in lower classes you might have seen how to write this. So many uh, zeros in small something like to the power 8. In short, have you remember how can we write this a big number into a small short way? याद है आपको? How can we write this big number into small way? How can I write it? 10 to the power 2, 10 to the power 3, right? Instead of writing a very huge number, you can write like this. Similarly, in network, if I want to write 10.0.0.0 to 10.0.255.255.255, you can write something like this. Yeah, something like this. So this is the IP range. And in short, if you don't want to write a huge numbers, you can just write that in a short form, and you can derive from that, right? So how can we do that? So in IPv4, what is a how many bits are there? In IPv4, how many bits are there? 32. So if you find something like this slash 24 or 10.0.0.0 slash uh, 24, these both are same. So how can you find the IP range? So this is the first IP. This is the first IP. That is 0.0.0 10.0.0.0. After that, you have to find the last IP. What will be the last IP in your network? So this is how in generally you will find a network. It gives a range of IP addresses. So how can you find this? Okay. So this is the give the actual value how many list of IPs are there. So how can you calculate 32 minus 24?
32 minus 24, it will give you 6, 7, 8. 8. How many bits are there? 2 bits to the power 8. It will give you nearly 256. 2 to the power 8. Okay, 256. So 10.0.0.0, then 10.0.0.255, starting with 0. Okay, so this gives you how many IP addresses are available in this network. So 24. So 32 minus 24 will give you the power value to the power the remainder. It will give the number of IP in the network. Right now there are 256 IP. So the first IP is this. Then what will your last IP? 250. Start counting from 0 to 255. Okay. Similarly, take one more example. Slash 20. So 32 minus 20. What will be the remainder? To the power 12, 4098, 4096. Okay, so this number of IPs are available. So what is the starting IP? 10.0.0.0. Then what will be the last IP? 10.0.0. 16.255. This is how you will get the last IPs. Okay, this is a list of IPs, and this is a number of IPs in this network. This is a network IP range. So this is a number of IPs available in the network, and this is the first and last IP. So there's a website called CDI CDI CD CIDR dot XYZ. You can just write that IP slash 24. Now you can see it has given me the first IP and the last IP. Okay, ideally first 10.0 and last 255 is not shown, they are reserve IPs. So that's why you can see the base IP and the broadcast final IPs. 256 is the final IP. If I give 16, it will give me 0.0 10.0.0.0 10.0 255. Okay, so this is how in a network the IPs are written. If you write 32, that means only one IP is available. Slash 32. So if you calculate, if something is written like this, slash 32. So 32 minus 32, that will be 0. To the power 0 is equal to 1. So that is only single IP. This is only one IP. So if you want to represent a one IP in the network, this is how you do write. So this is a CIDR range, or the range of IP address in a network. So that's what, if you want to find the IP address in a network, you have to go, you can check the CIDR website. So if you go and check any network, it will be written something like this, in this format, with prefix. Okay. So what you can do with custom VPC, the VPC which you are going to create by your own. Okay. So you can launch instance. You can launch instance in a subnet of your choice. Now, what is subnet?
Anybody knows what is subnet? Subnetwork. What is subnetwork in general? So you can say uh, cre- dividing or separating your a very huge network into small chunks. It's called subnetwork or subnet. Okay, so you can take example where there is a very huge group of people. You are dividing them that huge group into small parts or small groups, or you can say subgroups. Similarly, subnetwork or subnet. Okay, it's a part of your network where the big network is divided into small chunks. That is a subnet. So let's say you have a very huge network with 1,000 IPs. Okay, so in subnet there can be four subnet with 250 IPs each. Right, four subnets can be created with 250 IPs each. That is a subnet. So you can create a subnet and launch the machine into the subnet as per your choice. Assign custom IP range in each subnet. So you can create a custom IP and assign it to your subnet. Configure the route table between the subnets. So how your network, your signal will travel along the network. You can control that. Create internet gateway and attach it to VPC. Much better security control over your AWS resources. Assign security group to individual instance and subnetwork NACL list. You can do these all things with your custom VPC, or these are the few component of VPC. Now, what's the difference between default VPC and custom VPC? So, Amazon is coming, or when you create your account, a default VPC is created for you. Okay, by default, Amazon has created a VPC called default VPC. So it's a user friendly, allow you to immediately start working and deploy your EC2 machines. Okay, immediately. So till now, have you worried about your network? Have you worried about where the signal is traveling? Did you worry about the security that in that detail? No. You just have to use the default VPC, and you can easily start the EC2 machine or start playing with EC2 machine. So Amazon knows that when you start working on Amazon, and if they ask you to create VPC, it will be tough. Okay, so that part was handled by Amazon for initial purpose. But as an organization, as a company, you should create your own VPC for security concerns. You don't need to know anything about networking to able to provision and deploy an instance in the cloud.
So you don't have to worry about if you don't know the network. You can use default VPC easily. All subnet in default VPC have route to internet. Now this is important thing why we are not using default VPC in industry. So all the network till now you are connecting to VPC, right? Till now, okay. So each EC2 machine needs to connect to a network, and right now you're connecting to VPC, right? You are able to access your EC2 machine over the internet. Agree? That means that EC2 machine was public. That's why you are able to connect to that EC2 machine. Why we are able to connect to that EC2 machine? Because that machine was public. And if the machine is public, that means the network to which it is connected, it allow public, or you have a public access to that network. So all the subnets or all the I any machine which is created in default VPC has internet access or route to internet. If you are talking about private network, then if you want to create a private network or if you want to deal with private network, then you can't reliable on default VPC, because in default VPC everything is connected to internet, and if everything is connected to internet, that means it's public or private. अगर सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है तो पब्लिक है प्राइवेट है? पब्लिक हो गया ना. That's the problem. That's why in industry we are not using VPC. We are not using default VPC. Each EC2 machine has both public and private IP address. You might have seen EC2 machines when we are creating, it has a public IP and private IP, right? So it is if it is connected to public EC network, then only it will get a public IP address. Otherwise, you have to each EC2 machine will have by default private IP. If you are if that network is connected to internet, then only it will get a public IP address. If you do if you delete the default VPC, you can recover it now. So previously it was tough to recover the default VPC, but now you can recover it. So don't ever do any configuration change in default VPC. कभी भी default VPC में कोई भी configuration change नहीं करना. Always create your custom VPC. So whatever you want to do or whatever changes you want to do or customize your VPC, so create a custom VPC, then customize it. Don't touch default VPC. Okay. So these are the few things which you have to remember as a theoretical part. Now coming to VPC lab. Yes. So in the lab, let's create VPC. Okay. Now how can you create? What are the steps? So in your Google Drive, you can see assignment number 1. Just open the assignment number 1. You can go step by step. This is the only step you have to go.
So you have to mug up, you have to remember, but this is how you have to create the VPC. Okay, there is no other way. You have to go step by step how you can create VPC, subnets, routable, and other property. Okay, so let's go and in the console and check what are things which are coming as a default VPC, and if you create a custom VPC, what are the components of VPC you are getting. So जब हम लोग डिफॉल्ट VPC बनाते हैं, यूज करते हैं, so उसके कंपोनेंट्स क्या है और कस्टम VPC कंपोनेंट्स क्या है. So again, VPC is a region specific. VPC is a region specific service. Okay. So VPC. So in each region, you will find one VPC, or that's a default VPC. Okay. If you go to your VPC, you will find default VPC. The VPC ID is quite small. If you go to Mumbai, Virginia, again, you will find a VPC created in Virginia region. You can see. So each region, yeah, this is a default VPC provided by Amazon. In each region, it is a default VPC is created so that you can create your EC2 machine, you can create your other application easily. So each machine, like EC2 machine, your RDS machine, required a network. Without a network, you will not able to create any machine. So for that, Amazon has provided you a default VPC. Till now, we were using this. Now, what's the drawback of this default VPC? What is the drawback of default VPC? It is in default VPC, all the machines will be connected to internet. So it's a user friendly. You don't need to know anything about networking. But in default VPC, everything is connected to internet. That's why you will get a public and private IP. So I don't have that much control on default VPC. I can do changes, but it is not recommended by Amazon to change the default VPC. Instead of that, you should create your own custom VPC. And this is the IP range. This is the IP range of your net default VPC. Okay. So now in the left side, you can see the subnet. So this network has three subnets. So this default VPC, which has IP address of this. So how many IPs will be there? CDI CIDR 172.31.0.0/16. So this network has 65,000 IP addresses available. This network has 65,000 IP available. Out of that, they have divided the 65 IPs into three segments, that is 172.31.30.0, 31.32.0/20. So you can see out of 65,000, nearly 64,000, it has divided into 4,000 IPs here. Similarly, 4,000 IPs here, 4,000 IPs here. This is how right now a complete VPC is divided into three segments using 4,000 IP. That is 12,000 IPs are distributed to these subnets. What is subnets? Small network. Okay. In a very huge network, you're dividing them into small network. So these are all subnets associated to your default VPC. You can see the VPC ID. Okay. Each subnet should be in one availability zone. Every subnet will be associated or attached to one availability zone. जो भी आप सबनेट बना रहे हो उसको एक availability zone में you have to configure it.
One subnet, one availability zone. Again, one subnet, one availability zone. Route table, again, you can see there is a route table available. This is the property for default VPC. You can see they are attached to default VPC. So when you create a default VPC or there is a default VPC available, a route table is present by default. Internet gateway. You can see there is an internet gateway available for default VPC. Then Elastic IP, there will be no Elastic IP. Endpoints, there will be no endpoints. NAT gateway, there is no NAT gateway for default VPC. NACL, now network access control list. Now you can see default VPC again has one NACL. Security group, so we have created this so many security group, but by default there will be a default security group. This one in a network you will find a default security group. You can see the VPC ID 7B6 is my default VPC ID. Now let's go and create a VPC. Now VPC is not chargeable service by default. If you create a VPC, there will be no charge associated to it, but the individual component and or your when your EC2 machine use VPC, then only you will be getting charged. How you will be getting charged, I will explain you over the period of time. So let's create another VPC. For creating VPC, there is no charges. My VPC. So these steps I have written in your assignment. Create new VPC. These steps. Step number 1. Create new VPC. Now you have to provide the IP address range. You are creating a network. You have to provide the range of IP. So I'm selecting this 10.0.0.0/16 is the total IP addresses in my network. So how many IPs will be there? Let's check it out. 10.0.0.0/16. Now you will say, sir, how do I decide that how many IP ranges or which IP range should I use? So in your net company, you have to sit with security team. You have to understand how many IPs will be required in your network. What is the IP ranges? So you have to consult with your security team and they can guide up. If there is no security team, then if you are the architect, you can just select the huge IP range, that is 65,000. Okay, and out of three ranges that starts with 10, 172 to 192, you can select any one of the ranges. Do you want to enable IPv6 in your network? You can enable them IPv6 network. If you want, you can disable. It's up to you. Okay, if you are going to use in your company IPv6, then you can enable them. Otherwise, just click on create VPC. That's it. Now your VPC is created. It's quite simple to just create the VPC. Now you can see here tendency default not required. This default tendency no dedicate. Whatever the default property Amazon is providing. This is IP range of IPv6. This is IPv4. CIDR range. This is for IPv6, IPv4 and 6. Cloud flow logs not required right now. So as soon as you created a VPC, let's check a subnet is created. No subnet is created. So when you create a VPC or you can create a custom VPC, no subnet is created. No subnet is created. Let's check it out route table. Now, okay, before that, if you check your VPC ID is very huge as compared to default VPC. Okay, VPC ID is very huge. हमारा जो कस्टम VPC है उसका जो VPC ID है is very huge. Check out the route table.
So you can see a route table is created for your VPC. So whenever you're creating a VPC, a separate route table is created. Let's check out on internet gateway. No internet gateway. Asgress, no. Endpoint, no endpoints. NAT gateway, again no NAT gateway. NACL. Now you can see here NACL, network access control list, is created for your custom VPC. And if you click on security group, refresh it once, a default security group is created with all traffic allowed and all outbound traffic allowed. Okay, so default VPC, all traffic is blocked outside the world. In default VPC, all traffic is only allowed within the network. That's it. So that's why we are never using default VPC. It only allow inside the network. That's it. Traffic within the network, not outside the network. So in the assignment, when you create a new VPC, new route table, NACL and security group will be created by default associated to your new network. So you have to remember three components are created. These are the three components which right now is created. Yes or no? When we created a VPC, you can see within a region, we have used Mumbai region. You can use any of the region you like. Okay, so in a region, we created a custom VPC or my VPC, the name you can give, whatever the name you want to give to the VPC. This is my VPC, and the the VPC range you're given is 10.0.0.16. Now, as soon as you create a VPC, what are the components of VPCs are created? Security group, NACL, and a route table. Security group, this is a default security group. This is a default NACL and this is a default route table. Okay, till now we have used security group. What is security group? It allow what type of traffic should be coming inside your EC2 machine, right? It control what type of traffic should be entering your EC2 machine. Similarly, NACL, network access control list, is used to control the traffic in your network. Complete network, not only EC2 machine, complete network. Okay, so we'll talk about NACL and VPC subnets in detail, or security group in detail. Now, what is the next step? Create two subnets. Create two subnets. Now, let's go to subnets. As you can see, there is no subnet created for your custom VPC. You have to create your own subnet. Amazon doesn't know what IP range you require. So आपके ऊपर है कौन से सबनेट्स क्रिएट करने हैं. अब आपने अपने IP रेंज खुद सिलेक्ट किया है तो सबनेट्स भी खुद सिलेक्ट करो. So create a subnet. Select the VPC, my VPC. Okay, you can give the name, whatever the name you like. Then availability zone, you have to select one availability zone. So it's mandatory कि आप जो भी सबनेट बना रहे हो उसको एक अवेलेबिलिटी जोन में डालना है. ओके, और उसके ऊपर नेक्स्ट है आईपी रेंज. उस सबनेट में और छोटा जो नेटवर्क बना रहे हो आप उसकी आईपी रेंज क्या होगी. यू हैव टू सिलेक्ट दैट. ओके, सो जनरली how I give the name?
स्लैश ओके इतना ओके 1 एंड अवेलेबिलिटी जोन का नाम दैट इज एपी साउथ 1A. Whatever the name you want, you can give. It's not like that this is the name you have to give. This is the name I'm giving. And what is the IP range I'm selecting? 10.0.1.0/24. Okay, this is IP range. If you go here and check 1/24, so out of 65,000 I'm creating a network, or I'm selecting 256 IP only. मैंने एक ग्रुप बनाया, उसको सबनेट बोला और उसमें कितनी आईपी डाली? 256. That's it. From a big network, from 65,000, I'm selecting only 256 IP. If you want to enable IPv6, you can enable it. Otherwise, you can just skip and create subnet. That's it. So now you can see I have created a subnet. It is on AP South 1. And is this a default subnet? Default subnet मतलब क्या default VPC का subnet है क्या? नहीं. And that's it. Auto assign public IP? No. And you can see the available IP addresses. कितनी IP address बोली थी मैंने यहाँ पे? 256 बोली थी. But here it is saying only 251. 5 IPs are short. Can anybody explain me why the 5 IPs are short? As per the chart, it is 256. But here it is showing only 251. Why? Why it is showing only 251? This is a document of Amazon. Hopefully it is on that. Yeah. You can see here there are some IP addresses which are reserved by Amazon in a subnet. The first 4 and the last IP address in each subnet are not available for use. अगर आपने कोई भी सबनेट बनाते हो उसमें से first 4 and last IP are reserved for Amazon. You cannot use them. And why? The first IP is used by network, second is reserved by AWS VPC routing, again reserved by Amazon for future, and the last is broadcast IP. So this 5 IP 0, 1, 2, 3 and 255 is always reserved by Amazon in a subnet. That's why 5 IP कम है. Let's create a new subnet in new VPC. Subnet number 2, that is this one. Now here I'm selecting availability zone B. Why I'm selecting different availability zone? क्योंकि मैं को अपना सबनेट डिफरेंट availability zone में बनाने हैं. So the machines which I'm going to create will be within this subnet. Okay. So generally you should try to create more availability zones. Availability zone 1, availability zone 1B, 1A. Okay. So एक सबनेट एक ही availability zone में होगा. Again, this subnet will belong to only one availability zone. You cannot create multiple availability zone within a subnet. एक subnet एक availability zone. Yeah, but you can create more subnets in 1A. एक availability zone में कितने भी subnets हो सकते हैं. Just like एक machine एक ही IP address से connect कर सकते हो ना. But एक availability zone में कितने भी EC2 machine बना सकते हो, वैसा है. So availability zone में कितने भी subnets हो सकते हैं, but एक subnet एक availability zone.
एक सबनेट सिंगल ऑल्टी जोन. So in my company or in many companies, we are creating multiple subnet in single ऑल्टी zone. 1A में दो तीन सबनेट होते हैं, 1B में दो तीन सबनेट्स होते हैं. Okay. So right now till here we have done. Yeah. Right. So you can create n number of subnet in a single OLT zone, but a subnet attached to single OLT zone. ठीक है. One subnet, it can be connected to one OLT zone AZ, but in a one AZ there can be n number of subnet. So you can see right now here 1A subnet, sorry, OLT zone 1A, two subnets are attached, default and the subnets which we have created. So right, but our subnet cannot have, the subnet cannot be attached to two OLT zone. जो सबनेट है वो 1A और 1B में बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. वो एक ही जगह रह सकता है. या तो 1A में होगा या 1B में होगा, और वो भी स्टार्टिंग में जब आप बना रहे हो, डिफाइन एट दैट टाइम, यू कैन नॉट modify after creating the subnet. No, you cannot share, because the hardware will be associated to that only zone in this network. Like, yes, on a subnet level. So if you're creating a subnet of 10 IPs, then 5 will be consumed by Amazon. Okay. So why subnet? Because I want to divide my VPC into small chunks. एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं. Okay. So VPC is on region level and subnet is on availability zone level. Now, third point, auto assign public IP. So why I have used two subnets? Because मैं पहले वाले को जो है ना, जो फर्स्ट था 1A में, उसको मैं पब्लिक बोल रहा हूँ, पब्लिक सबनेट, and second will be private subnet. Okay. So in public subnet, you require IPs to be allocated automatically. Remember, in when we were creating EC2 machine, automatically public IP was allocated from the Amazon pool of IP addresses. हमारे EC2 machine में automatic IP address attach हो जाता था ना, public IP address. How? Because this subnet, you can see here, auto assign public IP is no. So जो भी इस सबनेट में क्रिएट होगा मशीन, उसको पब्लिक आईपी असाइन हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली. So that's why you have to go to action, edit, routable, edit subnet settings, and click on here, enable auto assign public address. That's it. Don't do any changes. Just click on this. Here, if any EC2 machine is created inside this subnet, a public IP address will be assigned to it. Till here it is done. Now, inside your network, inside your VPC will look like something like this. Yes. अभी हमने इतना बनाया है, देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. पहले ये था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जस्ट ट्राई टू इमेजिन और ट्राई टू see the picture. This is the things which was created when we created the VPC, component of VPC. Next is next component.
we created subnets, पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट ऐसा बोला है अभी, उसमें भी कुछ किया नहीं है पब्लिक और प्राइवेट के लिए, अभी सिर्फ बना के रखे हुए हैं। ये डायग्राम में किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन टिल दिस डायग्राम? Okay, so now you're creating a network, right? So network में ideally everything should be private, but आपको उस नेटवर्क में पब्लिक एक्सेस भी देना पड़ेगा ना, और बेसिकली इंटरनेट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा. It's not that always you will using private applications. You might require public access also. इंटरनेट भी चाहिए होगा ना कभी कभी, right? So you have to create a internet gateway. So you can see here we are going to use internet gateway. It's just like you are attaching a Wi-Fi in your house. Okay, it's similar to that. So you can go to internet gateway in the left side. You can see right now it is create attached only to default VPC. It is create one internet gateway is there and it is attached to default VPC. एक ही इंटरनेट गेटवे है और वो किससे अटैच है? डिफॉल्ट VPC से. तो क्रिएट एन इंटरनेट गेटवे. My internet gateway. Okay, create one. That's it. You have created an internet gateway. Now you can see it is not attached to any VPC. आपने बना दिया, but it is not attached. You have to attach it to VPC. So click on internet gateway. Go to action, attach to VPC. Now you can see it is only showing your VPC. Only showing your VPC. No other VPC. Select your VPC and attach. So now your VPC, your custom VPC is attached to your custom internet gateway. बस उसको इंटरनेट हो गया. Internet is attached. Let me create one more internet gateway. My IG2. एक और मैंने इंटरनेट गेटवे बनाया. कैन आई अटैच टू इंटरनेट गेटवे टू माई VPC? क्या आपका लैपटॉप दो वाईफाई पे चल सकता है क्या एक साथ? यस और नो? At a time, can your laptop work on two Wi-Fi? Let's see. Let's see. Can our VPC be attached to multiple net? So you are getting an error. You cannot have. You don't have any VPC which doesn't have internet. So by default, okay, one VPC, one internet gateway. That's it. One VPC, one internet gateway. You cannot attach multiple internet gateway to your VPC. So that's why I'm deleting it. One VPC, one internet gateway. That's it. And if you are using internet within your VPC, then you are going to get charged. Otherwise, no. अगर आप VPC के अंदर से जो EC2 मशीन बना रहे हो उसके अंदर से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, डेटा डाउनलोड कर रहे हो, तो चार्जेस लगेगा. अदरवाइज देयर इज नो चार्जेस फॉर VPC क्रिएशन और अटैचिंग अ इंटरनेट गेटवे टू योर VPC. अगर कोई भी EC2 मशीन इस नेटवर्क में बना रहे हो, वो इंटरनेट एक्सेस करता है, तो डेटा का जो ट्रांसफर होगा उसके चार्जेस लगते हैं. ओके. No charge. This is done. Okay. Um, mm, Now we have only 10 minutes remaining.
and I want to cover route tables. No, we'll cover that tomorrow. So this is next part is creating a route table and creating a EC2 machine inside the route table. It will take 15-20 minutes. Mhm. Okay, let's see. Yes. For VPC, I'm saying it's a very, you have to go step by step. You have to at least create three VPC throughout your certification or your journey, at least three times, because there are so many steps and they have to go step by steps. So all that's why I'm showing you this assignment. अभी तक मैंने आपको कोई भी assignment खोल के उस पे steps cover नहीं किए. Why I'm showing you? Because this has to be go one by one, and it's quite tough, or you can say a little hard. I will not go with tough word. A little hard. VPC में components बहुत सारे हैं, but आपको याद रखना पड़ेगा. Network है. If anybody is here for network, they will love it. Otherwise, as a developer, you have to mug up, you have to understand the property, and then only you will be able to create it. Okay. Now the next part. Yes. Yeah, tell me. Yeah, yeah. Everything. This whole folder is there in your Google Drive as it is. Okay. Yesterday only I have synced it once again. Anyhow, now take a VPC. Now again take an example. चलो imagination करते हैं. Take this as a society. ओके सोसाइटी है. सोसाइटी के अंदर क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज मेन गेट, राइट? दिस इज अ मेन गेट. एक सोसाइटी के अंदर मेन गेट होता है. वीपीसी को समझने के लिए दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू. ओके, जस्ट इमेजिन वीपीसी एज अ सोसाइटी. दिस इज अ मेन गेट. Inside your society there can be n number of buildings, right? Building number 1, building number 2, building number 3, and building number 4 right now. Okay, and let's say there is an admin building here. Okay, B1, building 1, building 2, building 3, and building 4. And this is your main gate. Now compare your main gate with internet gateway and your building as your subnet. Okay, this is your internet gateway, IG. Now tell me कि अगर मुझे ये जो नीचे की और ये जो एडमिन बिल्डिंग है, ठीक है, एक एक करके करते हैं. अगर मुझे ये बिल्डिंग्स को और कोई भी बंदा बाहर से आ रहा है उनको इस बिल्डिंग का एक्सेस देना है तो इनडायरेक्टली इसको पब्लिक बिल्डिंग बोल सकता हूँ. कोई भी आपके जा सकते हैं. तो कोई भी बाहर से आ रहा है डायरेक्टली बिल्डिंग को एक्सेस कर रहा है तो पब्लिक बिल्डिंग हो गई. यस और नो? बट पहले रास्ता बनाना पड़ेगा ना इसके लिए. पहले रास्ता बनाना पड़ेगा. चलो रास्ता बनाते हैं छोटा सा. ओके, नाउ उससे पहले एक रास्ता बनाने से पहले यहाँ पे एक फोर राउंड वो बनाते हैं. राउंड चार रास्ता बोलते हैं ना जो हम लोग, फोर वे. सो योर इंटरनेट इज कनेक्टेड टू दिस चार रास्ता या फोर वे. Okay, now anybody, any building which is connected to this four way will have direct access to outside world.
अगर मैं इस बिल्डिंग को इससे अटैच कर दूं 4 वे से, दैट मीन्स दिस बिल्डिंग विल बी एक्टिंग एज अ प्राइवेट और पब्लिक। समझ आ रहा है? ये किसी को नहीं आया तो बताओ। ये जो है ये पब्लिक है, इसको मैं ग्रीन करता हूं, राइट, क्योंकि ये मेन गेट से अटैच है। ये जो रास्ता है, अगर मैं इसको किसी भी बिल्डिंग से अटैच करूंगा तो वो पब्लिक हो जाएगी ना, ऐसे ही होता है ना, राइट, हो गई। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो चार रास्ता है वो इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं चार रास्ते को हटा दूं, काट दूं, तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा ना। तो प्राइवेट बचेगा या पब्लिक बचा? प्राइवेट हो गया। एग्री? मेन क्या है, ये चार रास्ता यही बता रहा है ना कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे मैं एक और चार रास्ता करता हूँ, यहाँ पे एक और जो इससे अटैच नहीं है, बस बाकी बिल्डिंग से अटैच है। ये इससे अटैच है। तो बी और फोर, B3 और B4 क्या है, पब्लिक है प्राइवेट है, हुआ अभी यहाँ पे? नहीं, तो हमें वो करना ही नहीं ना, हमको तो B3 और B4 को प्राइवेट रखना है। ये पब्लिक है। ओके, एंड दिस इज प्राइवेट। प्राइवेट रखना मतलब क्या करना है मुझे, इंटरनेट गेटवे से दूर रखना है ना, बेसिकली इंटरनेट गेटवे से दूर रखना है। एग्री? यस और नो? ये चीज किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताओ। और मेन इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, ये जो चार रास्ता है वो कनेक्ट कर रहा है ना, बेसिकली। किसी को समझ नहीं आया तो बताइए। ओके, राइट, आई वाज अबाउट टू से दिस इज अ राउटर in a network. What is router? What is the definition of router? It routes your network. What should go to where? What type of traffic should go? तो चार रास्ता वही तो कर रहा है कि इधर जो आ रहा है इसको यहाँ भेज रहा है, राइट। अभी देखो, मैं इसको ठीक है, मैं बाद में करता हूँ, इसको यहाँ से भी अटैच कर सकता हूँ, पर ये डायरेक्टली बाहर से अटैच नहीं होगा। ऐसे भी कर सकता हूँ, पर ठीक है, वो बाद में करते हैं। बट एनी हाउ, दिस इज राउटर नंबर 1, दिस इज राउटर नंबर 2। नाउ कैन यू से आउट ऑफ वन विच इज अ पब्लिक राउटर? This is a public router and this is a private router, right? जो भी बिल्डिंग प्राइवेट राउटर से अटैच है वो प्राइवेट सबनेट है। जो भी बिल्डिंग पब्लिक राउटर से अटैच है, पब्लिक क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इस राउटर पे इंटरनेट गेटवे अटैच है एक साइड पे। ये राउटर पे एक साइड पे क्या अटैच है, इंटरनेट गेटवे, और दूसरी साइड जो भी बिल्डिंग से अटैच होगी वो पब्लिक हो जाएगी। यस और नो? वापिस से रिपीट करता हूँ। Why I'm saying इसको पब्लिक राउटर, बिकॉज उसका एक एंड पे जो राइट साइड है उस पे इंटरनेट गेटवे है। जैसे ही इंटरनेट गेटवे लग गया वो पब्लिक हो गया। अब उसके लेफ्ट साइड कोई भी सबनेट अटैच करोगे या बिल्डिंग अटैच करोगे तो वो पब्लिक होती जाएगी ना। एग्री? अगर मैं उसको राइट साइड में इंटरनेट गेटवे देता ही नहीं हूं, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे ये कनेक्शन कनेक्शन है ना, इसको ब्रेक कर देता हूं, अब क्या होगा, ये पब्लिक या प्राइवेट? राउटर नंबर 1। सिंपल। ये इस कंसेप्ट समझ आया, लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट समझ आया?
अगर इतना है तो नेक्स्ट स्टेप बहुत इजीली समझ आ जाएगा। नाउ वीपीसी में ये मेरा सोसाइटी क्या है, वीपीसी, राइट। अब ये राउटर जो है, एक बाय डिफॉल्ट मैंने राउट दिखाया था आपको, बाय डिफॉल्ट एक राउटर आता है, राउटर या राउट टेबल, राउटर ही है ये। राउट टेबल मतलब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं टेबल है, इसे राउट टेबल बोलते हैं। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए राउट टेबल में करना पड़ता है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट एक राउटर आता है, ठीक है। तो मैं दोनों राउटर हटा देता हूं अभी के लिए, ये समझो ये राउटर है, ये राउटर है, इन दोनों को भूल जाओ। अभी ये राउटर अभी आया हुआ है, ये चार रास्ता हमारे पास अवेलेबल है। इसको पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, ये आपके ऊपर है। इस राउटर को एज अ पब्लिक यूज करना है या प्राइवेट यूज करना है, वो आपके ऊपर है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ ये जो राउटर है, अगर मैंने इसको इंटरनेट से अटैच कर दिया तो पब्लिक बनेगा, प्राइवेट बनेगा? ये राउटर पब्लिक बन जाएगा, ठीक है। क्या मैं एक ही राउटर को पब्लिक और प्राइवेट यूज कर सकता हूं? क्या मैं एक ही राउटर को पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूज कर सकता हूं? नो, द आंसर इज आइदर इट विल बी पब्लिक और प्राइवेट। यस, सो एक राउटर या तो पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, दोनों नहीं एक्ट कर सकता, क्योंकि अगर वो इंटरनेट गेटवे से अटैच हो गया तो पब्लिक ही हो गया ना, सिंपल। आइदर यस और नो वाला केस है। सो मैं एक राउटर को पब्लिक और प्राइवेट की तरह यूज नहीं कर सकता, मुझे दो राउटर चाहिए अगर मुझे पब्लिक बनाना है और प्राइवेट बनाना है तो। Amazon ने कितना राउटर दिया हमको बाय डिफॉल्ट? एक, और इसको नाम दिया है मेन राउट टेबल। इसको क्या नाम दिया है? मेन राउट टेबल, ठीक है। नाउ द फनी थिंग इज, आप जितने भी सबनेट अटैच करते हो, ठीक है, भूल जाओ अभी इंटरनेट गेटवे, मैंने कहा ना इन दोनों का भी हटा देते हैं, इन दोनों का भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं। फनी थिंग इज, जब भी आप कोई भी सबनेट क्रिएट करते हो, मतलब कोई भी बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, बाय डिफॉल्ट Amazon क्या करता है, उनको इस राउट टेबल से अटैच कर देता है। किससे? मेन राउट टेबल से, बाय डिफॉल्ट। देखना है, देखो ये मेन राउट टेबल पे जाओ, यहाँ पे देखो सबनेट एसोसिएट लिखा हुआ है, क्लिक करो, अब पढ़ो नीचे, एक्सप्लिसिट सबनेट, मतलब मैंने खुद डाला है subnet without explicit subnet. The following subnet not have been explicitly associated with any route table. मतलब किसी ने राउट टेबल में अटैच नहीं करे इन सबनेट्स को, एंड आर देयरफॉर एसोसिएटेड विद मेन राउट टेबल। ये दोनों मेन राउट टेबल से अटैच है, मैं मेन राउट टेबल में हूं। अगर आप बोलते नहीं हो कौन से राउट टेबल में अटैच करना है, तो बाय डिफॉल्ट कौन से राउट टेबल में अटैच होते हैं? वो मेन राउट टेबल में। बेसिकली वो ये चार रास्ता है ना, जनता का चार रास्ता है, जो भी बिल्डिंग बन रही है उससे अटैच हो जाती है बाय डिफॉल्ट, इससे नॉट अटैच होनी है। और इन अदर वर्ड, इफ यू आर क्रिएटिंग अ सबनेट, you have to attach one route table to that subnet. You have to attach a route table to that subnet. अगर आप सबनेट बनाते हो तो एक राउट टेबल को आपको उससे अटैच करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट डूइंग मैन्युअली, तो किससे अटैच होगा वो सबनेट? कौन से राउट टेबल से सबनेट अटैच होगा? मेन राउट टेबल, और द राउट टेबल विच इज कमिंग विथ योर वीपीसी, दैट इज कॉल्ड मेन राउट टेबल। क्लियर है इतना? ये सुनो पहले, ये जो सबनेट है Amazon ने बना के दिया है मुझे, जिसको बोलते हैं मेन राउट टेबल। और जब भी आप कोई सबनेट बनाते हो, वो किससे अटैच होता है? मेन राउट टेबल से। इट्स जस्ट लाइक अ मदर, मास्टर सबनेट और मदर सबनेट, सॉरी, मास्टर राउट टेबल या
मदर राउट टेबल, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जब भी आप सबनेट्स बनाते हो, वो किससे अटैच होने वाला है? बाय डिफॉल्ट मेन राउट टेबल से। क्लियर है? यस और नो? मैं बहुत वापिस से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप सबनेट्स क्रिएट करते हो, किससे अटैच हो जाता है? मेन राउट टेबल में। ठीक है, इतना है। मैं राउट टेबल को अगर इसको इंटरनेट गेटवे से अटैच कर दिया तो क्या होगा? ये राउट टेबल क्या होगा? प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा? ये राउट टेबल क्या बन गया? पब्लिक। तो जितने भी सबनेट इससे अटैच है सब क्या हो जाएंगे? प्राइवेट या पब्लिक? ठीक है, अभी मैं नया सबनेट बनाता हूं। ये किससे अटैच होगा बाय डिफॉल्ट? किससे आगे चिपकेगा? मेन राउट टेबल से। अगर मेन राउट टेबल इंटरनेट से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? पब्लिक। टेल मी, इज दिस ए राइट अप्रोच कि कोई भी सबनेट बन रहा है वो पब्लिक है? परफेक्ट। एज पर सिक्योरिटी, एज पर Amazon recommendation, as per general practice, whatever things you have created, it should be private. You have to explicitly make it public. You have to explicitly make them public. मतलब अगर आपको जरूरत है तो ही पब्लिक करो, नहीं तो प्राइवेट रहने दो। ठीक है, तो अगर मैं अपना मेन राउट टेबल को इंटरनेट से अटैच करता हूं तो कोई भी चीज बना रहा हो तो पब्लिक बन जानी है ना। Again, if I'm attaching my main route table to internet gateway, so any subnet which is coming right now will be public, which is not good. So never attach main route table to internet gateway. दिखाता हूं मैं कैसे। ये मेरा मेरा मेन राउट टेबल है। दिस इज माय मेन राउट टेबल। यू कैन गो टू राउट्स and you can just click on edit and you can just add 000 dot, मतलब this is complete IP address, huh? If you go to 0.0.0.0/0, you can see all 4 crore IP address, मतलब over complete IP range. Okay, that's why we give 0.0.0.0 complete IP range, complete world, and just search internet gateway. It will give you the your internet gateway. So जो मेरा मेन राउट टेबल था ना, उसमें अटैच कर दिया इंटरनेट गेटवे यहां से। ये रहा। दैट मीन्स अभी कोई भी सबनेट क्रिएट करूंगा ना, उसको इंटरनेट मिल जाना है। इज दिस अ गुड अप्रोच? नो। सो फॉर दैट रिमेंबर, एक रास्ता और बना दो, एक 4 रास्ता और बना दो। ओके, और उसको इंटरनेट गेटवे से अटैच कर दो। ठीक है, राउट टेबल हो गया। अब जो जो पहले इस रास्ते से अटैच थे उनका ये रास्ता साफ करके मेन राउट टेबल से पहले कनेक्शन ब्रेक कर दो और उनको यहां पे भेज दो, इससे अटैच कर दो। सेकंड राउट टेबल नंबर 2, दिस इज योर कस्टम राउट टेबल। क्लियर हुआ ये चीज या नहीं हुआ? अब जब भी कोई नया सबनेट बनेगा वो किससे अटैच होगा? इससे या इससे? मेन राउट टेबल से या कस्टम राउट टेबल से? नो, नो। जब भी कोई राउट सबनेट बनेगा हमेशा मेन राउट टेबल से अटैच होगा। अगेन, जब भी कोई सबनेट बनेगा वो मेन राउट टेबल से ही अटैच होगा। वापिस से एक सबनेट बनाओ, वो मेन राउट टेबल से अटैच होगा। मेन राउट टेबल पब्लिक है प्राइवेट है? प्राइवेट है, तो आपके सबनेट्स भी प्राइवेट है। अगर आपको इसको पब्लिक करना है तो यहां से इसको कनेक्शन ब्रेक करो और इसको यहां भेज दो। समझ आया या नहीं? कितना समझ आया कितना नहीं आया मुझे बताओ। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
Your main route table should not be connected to internet. Why? Because whenever you are creating a subnet, जब भी कोई नई बिल्डिंग आती है तो वो मेन चार रास्ते से अटैच होता है, राइट? मेन मेन चार रास्ते से अटैच करना ही होता है. अगर आपको नया रास्ता बनाना है तो you have to create that first that different route table or different router and attach that building to that new route table. Explicitly attach करो. तो इससे क्या होता है, जब भी आप सबनेट क्रिएट कर रहे हो तो आपका वो प्राइवेट होगा और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको पब्लिक राउट टेबल में मूव कर दो. लेट्स डू दैट. लेट्स गो एंड क्रिएट अ राउट टेबल. पहले इसमें इस राउट टेबल में से इसको इंटरनेट के हटा देते हैं. ये मेरा मेन राउट टेबल है, इसमें इंटरनेट गेटवे नहीं देना मुझे. मेन राउट टेबल में इंटरनेट नहीं देना है. दैट्स इट. So that I'm creating a new route table. My public route table. Select your VPC and create. हो गया. यहाँ पे आप देखो सिर्फ लोकल लिखा हुआ है. That's it. और कुछ नहीं. ये आपका VPC का IP एड्रेस है. And if you go to subnets associated, यहाँ पे भी कुछ नहीं है. Okay. So what I'm doing, I'm adding a subnet associate. ये जो पहला वाला था ना उसको पब्लिक बोल रहा था मैं. ठीक है. And save. So मैंने पहला वाला सबनेट को किसको दे दिया? पब्लिक राउट टेबल को. अगर आप देखोगे अब या इसको मैं नाम देता हूँ मेन. पहले से मेन ही है. यहाँ पे मेन लिखा है. देखो मैंने जो बनाया वो मेन राउट टेबल नहीं है. मेन राउट टेबल कौन सा है? डिफॉल्ट वाला जो वीपी के साथ आया था. नाउ इफ यू गो हियर, इससे कौन सा अटैच है? सबनेट. सेकंड वाला सबनेट. पहले जो भी नया बनाया वो किससे अटैच है? 1 से. 1A. 1A से अटैच है, राइट? अब इसको इंटरनेट दे दो. आप इसके राउट्स में जाओ, इसके राउट्स में जाओ, एडिट में जाओ और इसको इंटरनेट दे दो. 0000 इंटरनेट गेटवे. दैट्स इट. क्या हो गया इससे? अब जब भी आप कोई सबनेट बनाओगे किस में जाएगा? इन दोनों में से जब भी आप सबनेट बनाओगे किस में जाएगा? मेन में जाएगा या पब्लिक में जाएगा बाय डिफॉल्ट? जब भी आप मेन में जाएगा. मेन प्राइवेट है पब्लिक है? अब मेन राउट टेबल प्राइवेट है पब्लिक है? राउट्स में जाओ, इसके पास इंटरनेट ही नहीं है तो प्राइवेट है. तो जो भी सबनेट है वो प्राइवेट बनेगा. अगर आपको उसको पब्लिक करना है तो पब्लिक राउट टेबल में जाओ जहाँ पे आपने इंटरनेट गेटवे अटैच किया हुआ है, ये ना, और उसमें यहाँ पे अटैच कर दो जैसे हमने इसको अटैच किया है. तो आप एक्सप्लिसिटली अटैच कर रहे हो, डिफॉल्ट अटैच नहीं दे रहे हो, एक्सप्लिसिटली मूव कर रहे हो. ये समझ आया? सॉरी. यस. तो दो चीज तो डिफॉल्ट आती है. तो लोकल उसको मैं बात करूँ. ठीक है, उसको नेटवर्क के लिए. बाकी हम लोग को ये अटैच करना है. अगर आप देखोगे राउट्स में लोकल बाय डिफॉल्ट आता है. यहाँ पे क्लिक करो, लोकल बाय डिफॉल्ट आता है. ओके. लोकल में हम देख. हम्म, ये है ना. अगर आप, हाँ, लोकल मतलब नेटवर्क के अंदर, विद इन नेटवर्क, सोसाइटी के अंदर. लोकल मतलब सोसाइटी के अंदर. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल को अगर आप साइड में रखो, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ना, ये पब्लिक. 0000 मतलब पब्लिक. राइट में क्या है? इंटरनेट गेटवे. ये पब्लिक, ये ओपन टू वर्ल्ड है, मैंने बताया हुआ है. मतलब सारी सारी आईपीस. हाँ.
This is not 60. This is 4 crore or 400 crores. Right, right, right. Gateway का IP or URL है that 3E9. If you get here 3E9. Okay, that is your network look like. Now इस बिल्डिंग का एक्सेस मिल गया मुझे. अगर मैं इसको ऐसे करूँ वापस से इस बिल्डिंग का एक्सेस मिल गया. राइट. सो आई कैन एक्सेस दिस बिल्डिंग. मतलब मैं इस बिल्डिंग में एक घर बना सकता हूँ. EC2 मशीन बना सकता हूँ. चलो फटाफट फटाफट बना देते हैं. EC2 प्राइवेट में नहीं बना सकते अभी. बाहर से एक्सेस ही नहीं. मैं कहाँ पे हूँ? मैं नेटवर्क के बाहर हूँ. राइट. हम लोग नेटवर्क के बाहर हैं. तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? यहाँ से इंटरनेट गेटवे के थ्रू. ठीक है. इंटरनेट गेटवे के थ्रू इस राउट टेबल के थ्रू मैं इसमें घर बना सकता हूँ. है ना. जस्ट लाइक अ बैंक. अगेन टेक एग्जांपल. अभी भी ऐसे है ना. आपके पास लिमिट कुछ चीज एक्सेसिबल कुछ नहीं है. माय EC2 मशीन. ओके. सेम लिनक्स 2 की वैल्यू पर हम वो यूज कर सकते हैं. नाउ हियर इन नेटवर्क कौन सा VPC है? डिफॉल्ट. हमको कौन सा यूज करना है? हमको खुद का यूज करना है. उसमें से कौन सा यूज करना है? पब्लिक. पब्लिक वाला मतलब 1A पब्लिक था ना. अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो देखना यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस ऑटो अनेबल था. राइट. हमने किया था. अगर इसको 2 पे क्लिक करते हैं तो देखना डिसेबल्ड. ठीक है. दोनों बना देते हैं. एक एक करके दोनों बनाएंगे हम. एक पब्लिक भी बनाएंगे एक प्राइवेट भी बनाएंगे. नाउ क्या चीज यहाँ पे कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है. हमने तो बनाया था ना सिक्योरिटी ग्रुप. डिफॉल्ट VPC में बनाया था. आपका सिक्योरिटी ग्रुप VPC के अगेंस्ट अटैच रहते हैं. तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है. हमको वापस बनाना पड़ेगा. माय कस्टम VPC सिक्योरिटी ग्रुप. ओके. तो आपने जो पहले बनाया था वो पहले उसके लिए था VPC के लिए. वापस से इसमें वो SSH डालना पड़ेगा. फिर HTTP. ओके. 0000. और क्या था? HTTPS. ओके. 0000. ओके. सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया मैंने. बाकी चाहिए कोई नहीं. कुछ नहीं चाहिए. दैट्स इट. ओके. सो ये मैंने पब्लिक EC2 मशीन बना दिया. पब्लिक लिख देता हूँ. ओके. इसमें मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. यस वी कैन कनेक्ट टू दिस. मीनवाइल अब आ रहा है मैं प्राइवेट बनाता हूँ. प्राइवेट मतलब जो दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप था ना वो बनाते हैं. माय प्राइवेट EC2 मशीन. ओके. बाकी सब कुछ सेम है. बस मुझे सबनेट दूसरा सिलेक्ट करना है. स्क्रॉल डाउन करो. की वैल्यू चल जाएगा. प्रॉब्लम नहीं है. नेटवर्क को एडिट करो. मेरा कस्टम VPC सिलेक्ट करो. और 1B और सबनेट नंबर 2. यहाँ पे देखो पब्लिक IP डिसेबल्ड है. ओके. और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो जो बनाया. नहीं तो अभी डिफॉल्ट में रखो. अभी के लिए डिफॉल्ट में रखो एंड जस्ट क्रिएट. ठीक है. ये पूरा स्टेप मैंने लिखा हुआ है. डोंट वरी. लिखा हुआ है. क्रिएट राउट टेबल. एडिटेड इंटरनेट गेटवे अटैच करा उस पे. और हमने हट वो कर दिया. फिर उसके बाद EC2 मशीन बनाया. पब्लिक IP एड्रेस न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया. पब्लिक EC2 मशीन बनाया. प्राइवेट EC2 मशीन बनाया. और EC2 मशीन में लॉग इन करते हैं. कौन से वाले में? पब्लिक EC2 मशीन में.
So let's go and log into public EC2 machine. This is my public EC2 machine. Refresh. देखो यहाँ से कनेक्ट कर पाते हैं क्या? कनेक्ट, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, हो गया। पुट्टी से कनेक्ट करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। अरे जस्ट कनेक्टर है, सिंपल। एक एक कनेक्टर है, एक सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट करता है आपके लोकल सिस्टम से, दैट्स इट। EC2 हाइफन यूजर एट द रेट पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या है? अभी आप देखोगे इस मशीन का पब्लिक आईपी है क्या? इसका है। दूसरे वाले का है क्या? प्राइवेट वाले का देखते हैं। नहीं है, होगा ही नहीं ना। तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, हाँ, तो प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी नहीं है। दोनों की देखो, दोनों की प्राइवेट आईपी है, दोनों की प्राइवेट आईपी है अगर आप देखोगे तो। और देखो आईपी एड्रेस देखो अब, 10.0.1.28, 10.0.2.125। दोनों का देखो, जिस जिस सबनेट में हमने किया वही आईपी अवेलेबल है, उनमें से लिया। तो पब्लिक वाले में कनेक्ट कर सकते हैं, तो पब्लिक में कनेक्ट करते हैं एक बार। सो बेसिकली यूजर नेम एंड आईपी एड्रेस और की पास करनी है, या अगस्त वाली की पीपी के बनाई थी हमने, वो पास कर दो। यस, कनेक्ट हो गए। प्राइवेट में कनेक्ट कर सकते हैं? नो, प्राइवेट में कनेक्ट नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते। अभी के लिए तो नहीं कर सकते, कल देखते कैसे करना है। प्राइवेट EC2 मशीन में कनेक्ट नहीं कर सकते। नाउ वन मोर थिंग बिफोर गोइंग वाइंड अप। कितनी आईपी एड्रेस थी हमारे सबनेट में, याद है किसी को? 251 थी ना, यहाँ पे लिखा था ना, देखो 251 थी ना, एक कम हो गई, 250 रह गई। क्यों? दोनों ने एक एक EC2 मशीन यूज कर ली ना। 251 आईपी एड्रेस अवेलेबल थी, अब कितनी रह गई? 251। इन दोनों ने एक एक यूज कर ली EC2 मशीन ने। तो आपके सबनेट में कितने मशीन बन सकते हैं? 250 मशीन और बन सकते हैं, दोनों में 250 250। समझ आया? ये सुनो, और दोनों के दोनों डिफरेंट अबिलिटी जोन में। देखो अबिलिटी जोन 1A 1B, क्योंकि हमारे सबनेट डिफरेंट अबिलिटी जोन में थे, तो सबनेट्स और अबिलिटी जोन सिलेक्ट ऐसे करना है। क्लियर है? टिल हियर, टिल दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 वी हैव, पॉइंट नंबर 7 अदर, पॉइंट नंबर 7 हमने कवर कर लिया है, क्रिएटिंग अ VPC। तो अगर आप इसमें देखोगे, यहां तक हम आ चुके हैं, एक बार देख लीजिए। हम इसको भूल जाइए, NACL को अभी के लिए। हमने इंटरनेट गेटवे अटैच किया, एक पब्लिक राउट टेबल, एक प्राइवेट और मेन राउट टेबल था हमारे पास। हमने पब्लिक राउट टेबल बनाया, उसके बाद उसको सबनेट से अटैच किया। किससे? जो सबनेट को हमको पब्लिक बोलना था, उसके अंदर फिर EC2 मशीन बनाया और ये सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। और मेन राउट टेबल को कुछ नहीं किया, कुछ टच नहीं किया, तो ये सबनेट उसमें बाय डिफॉल्ट अटैच हो गया, राइट। और उसमें एक EC2 मशीन बनाया और उसमें सिक्योरिटी ग्रुप अभी डिफॉल्ट वाला यूज किया हमने। दैट्स इट, दिस इज डायग्राम राइट नाउ, यू कैन इमेजिन। किसी को यहां तक डाउट है क्या? और प्लीज VPC 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अब स्टॉपिंग हियर, लेट्स मूव फॉर टुमारो।